Hello, my dear students. How are you all? Hope you are safe and fine. Right? So, today you have given the unit test of math subject. So, how was it? Very easy, right? So, students, in today's class, we are starting with the new chapter, that is chapter 5. So, let's see what is the chapter's name. So students, here the chapter's name is addition. Yes, right. Addition. That means plus. Right? Now, let us understand the meaning of addition. What do you mean by addition? Addition का मतलब क्या होता है? Let's see. Meaning, addition is bringing two or more numbers or things together to make a new total. एडिशन का मतलब क्या होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को साथ में लाते हैं, उन दोनों को प्लस करते हैं, तो एक क्या बनता है? नया टोटल बनता है. राइट स्टूडेंट्स, द सिंबल ऑफ एडिशन इज प्लस. राइट, एज यू कैन सी. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड with the help of an example what is meant by addition. So students, here brother and sister are there. The brother's name is Minku and the sister's name is Chinky. Now they both have balloons with them, right? Minku has 4 balloons with himself and Chinky has 3 balloons. Right? So now the question is, see, the Minku has 4 balloons and the Chinky has 3 balloons. Now the question arises, how many total balloons are there in all? है ना? Total balloons कितने हैं मिला के? Right? So students, when we want to know how many total, whether in things or in numbers, total चाहिए हमें, so we add the numbers or things. Right? Now let's see. By adding all the balloons we will get the answer. मिंकू एंड चिंकी के पास जितने बलून्स हैं, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि टोटल बलून्स कितने हैं. लेट्स सी. नाउ लेट्स सी द आंसर. Minku has 4 balloons and Chinky has 3 balloons. So students, when we want to know how many total balloons are there, we have to add them, right? जब हमें टोटल चाहिए किसी चीज का, तब हम नंबर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. So let's see the answer. 4 plus 3. So the answer is 7. Students, how to count 4 plus 3? राइट अब 4 के बाद 3 नंबर्स तक काउंट करो. 4 के बाद 3 नंबर्स तक काउंट कैसे करोगे? 4 के बाद क्या आता है? 5, देन 6 एंड देन 7. तो 4 plus 3 is equals to 7. राइट? सो नाउ दिस यू हैव डन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. राइट, ये आपने किया हुआ है फर्स्ट स्टैंडर्ड में. नाउ इन टुडेज क्लास we will start with the part 1. Right? This is part 1 and the topic is addition of 2-digit number. अब आपने पहले 1 digit वाला किया था. Now in this standard you have to add 2-digit number. Right? And this is without carry. Students, with carry and without carry you will understood it by doing the exercise. Right? So first we will do without carry. So now steps to be followed. Right? अब 2 digit numbers हैं, तो हमें कौन से steps उसमें follow करने हैं? Let's see. Yes, the step 1 is add the numbers which are on ones place. हमें digits जो हैं पहले कहाँ से start करने हैं? ones place से. उन दोनों को add करना है. फिर step 2 कौन सा है? Add the numbers which are on tens place. After adding the numbers which are on ones place, then we have to add the numbers which are on tens place. Right?
Then the third one is find out the total. When we add the ones place numbers and the tens place numbers, we will get the answer. That is our total. Now, let us understand this with the help of an example, right? Wow, what you can see here? Yes, a garden in which apple trees are there, right? So, this is Ria. In her holidays, she visits her uncle's garden and she used to help her uncle by collecting the apples in the basket, as you can see on the screen, right? So students, now how many total apples are there in the garden? How they will find out? Yes, by adding them. So let's see how many apples they have collected in their basket. So this one is the first basket and the second basket. The first basket is and the apples are collected by Ria, and the second basket in which the apples are collected by her uncle. So in the first basket, yes, 14 apples are there, and in the second basket 22 apples are there. These 14 apples are collected by Ria and this 22 apples are collected by her uncle. Right? Now students, आप सोच रहे होंगे, right? What the question arise here? How many total apples are there in all? अब garden में कितने total apples थे, right? So you might be thinking how to find out the answer, right? So how to find out the answer? Let's see. Yes, let's find out the answer. What you can see here, students, on the screen? Yes, palm, right? This palm, right? This is left hand palm. Now students, in this topic, right, that is 2-digit numbers, we have to use finger mark method. What? Finger mark method. Now take your left hand and with me understand this chapter and the exercise very carefully, because it is very important chapter also. So now we will mark the numbers in our fingers, right? Now we will start from this tiny little finger, right? So let's start and mark the numbers 1, 2, 3. So in this tiny finger, how many numbers we have marked? 1, 2 and 3. Then the ring finger 4, 5 and 6. Then the middle finger 7, 8, 9. Then 10, 11, 12. And then the thumb 13, 14, 15. So students, now we have to count or we have to add the numbers by using this finger mark method, है ना? अभी आपको दो नंबर्स को प्लस करना है, लाइंस ड्रॉ करके नहीं करना है. आपको कैसे करना है? फिंगर मार्क मेथड से करना है. आपको फिंगर्स पे जो नंबर्स हमने मार्क किए हैं उसकी हेल्प से आपको काउंट करना है. सो व्हाट वी अंडरस्टूड in the example that Ria and her uncle collected the apples. So let's continue that only. By adding the apples of both basket, we will get the answer. है ना? अब दोनों बास्केट में कितने एप्पल्स हैं, अब आप उनको जब प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएंगे कि टोटल एप्पल्स कितने उन्होंने कलेक्ट किए. नाउ स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, वंस प्लेस पे कौन से दो नंबर्स हैं? 4 and 2. एंड टेंस प्लेस पे कौन से नंबर्स हैं? 1 and 2. कैसे? हमें क्या करना है? हमें टेंस और वंस लिखना है, फिर हमें नंबर्स को अरेंज करना है. ओके, रिया ने कितने कलेक्ट किए थे? 14. और उसके अंकल ने कितने कलेक्ट किए थे? 22. अब स्टूडेंट्स, व्हाट यू विल डू हियर? नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस. ओके, वी विल काउंट 4 plus 2 that are given on the ones place. Now students, 1, 2, 3,
एंड 4, राइट. 1 2 3 4. अब हमें 4 के साथ क्या प्लस करना है? 2. सो स्टूडेंट्स, यूज योर हैंड एंड फिंगर्स, राइट, टू फाइंड आउट द आंसर. अब 4 के बाद हमें क्या करना है? ऐड करना है. कितने ऐड करने हैं? 2. तो 4 के बाद 2 काउंट करो, क्या होगा? 5 and 6. Very good. So 4 plus 2 is 6. Then 1 plus 2. So students, what is 1 plus 2? Add करो. अगर 1 को आप 2 के साथ प्लस करोगे, so what will be the answer? 1 plus 2. 1 के बाद 2 को ऐड करना है, तो कितना होगा? 1 के बाद काउंट करो, 2 and 3. So 1 plus 2 is equals to 3. So our final answer is, these are the numbers which we have marked. Okay. So now, what is the answer? 4 plus 2 is equals to 6. And 1 plus 2 is equals to 3. So our final answer, our total is 36. How many apples are there in both the basket? Total 36 apples are there, right? Now students, this method you have to use in each and every exercise. Okay, अभी आपको लाइंस बना के काउंट नहीं करना है, आपको आपके फिंगर्स पे ही काउंट करना है, right? Now take out your maths notebook and in that take out new page. Write down the date, that is 26/9/2020. Students, on each and every page you have to write down the date. Whether the exercise is in homework also, you have to write down the date. Then write down chapter 5. Chapter 5 is addition. The chapter's name is addition. 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 And in that, after writing that, write down exercise 1. Okay. So what is the exercise 1 here? Addition of 2-digit number. What? Addition of 2-digit number without carry. Right? Now students, these boxes are given here. You don't have to make these boxes in your maths notebook as it is already given there. Students, I am again informing you that each and every exercise you have to start from new page. Don't continue the exercise on one page, right? You have to write down each and every exercise on the new page. So let's start with the first one. 15 and 63. We have to add 15 to 63. Right? Now students, count it to 5, right? Here, like 1, 2, 3, 4 and 5. 5 के बाद आपको 3 काउंट करना है. ओके, सो 5 के बाद 3 काउंट करोगे तो क्या होगा? 5 के बाद क्या आता है? 6, देन 7 एंड देन 8. सो स्टूडेंट्स, 5 plus 3 is equals to 8. Very good. 5 plus 3 क्या होता है? 8. देन टेंस, हमने पहले वंस प्लेस का किया, राइट? स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली that in the addition we have to start from the ones place. 5 plus 3 is equals to 8. Then tens place, 1 plus 6. Okay students, यहाँ एक easy method बताऊँ. अब 1 plus 6 और 6 plus 1 सेम होता है. आप 1 के बाद 6 ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आएगा और 6 plus 1 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, राइट? अब 1 के बाद 1 में क्या प्लस करना है? 6. सो काउंट 2, 3, 4, 5, 6, 7, right? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 1 plus 6 is equals to 7, right? अब 6 में आप 1 को ऐड करोगे, 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, तो 6 plus 1 भी क्या हो जाता है? 7. सेम वे स्टूडेंट्स, 3 के बाद अगर आप 5 काउंट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? 8. Very easy now. Now the second one. We will start from the ones place. Now
2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, द आंसर इज सेम. अब 2 के बाद 3 को काउंट करो. यस, यू हैव टू गेस इट. व्हाट विल बी द आंसर हियर? 2 के बाद 3 काउंट करो ऑन योर फिंगर्स. 2 के बाद 3 काउंट करना है. 3, 4, 5, है ना, 3 काउंट किए 2 के बाद, तो क्या आया? यस, वेरी गुड, 5. देन 3 प्लस 1. 3 प्लस 1 कैसे होगा? दिस इज वेरी इजी. डू इट ऑन योर फिंगर. यस, द आंसर विल बी 4. सो our final answer is 45. And in the first one, the final answer is 78. Okay, so let's continue this exercise. Yes, the third one. So 23 plus 1. Yes, nothing is given on the tens place. Right, students? So here, students, remember one thing. When any number is not given on any place, whether it is tens place or ones place, we have to assume that here it is 0. हमें क्या assume करना है कि वहाँ क्या है? 0. भले दिया हुआ नहीं हो, then also we have to assume that on this tens place 0 is given, right? So now let's start from the ones place. So on the ones place 3 plus 1 is given, right? So 3 plus 1 is equals to 3 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 4. तो 3 में आप 1 को जब ऐड करोगे तो काउंट करो अपनी फिंगर्स पे. 3 के बाद 1 ऐड करना है, तो 3 के बाद क्या आता है? 4. वेरी गुड. देन 2. 2 plus nothing is given. I already told you what we have to assume? 0. Right? So 2 plus 0. Students, remember one thing, that any number when added to 0, the answer will be that number only. मतलब 2 plus 0, तो आंसर क्या रहेगा? वही नंबर. हमने 0 के साथ किसको ऐड किया? 2 को. So 2 plus 0 is equals to 2 only. So our final answer is 24. Now the fourth one, 55 plus 31. अब वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे. 5 प्लस क्या है? 1. सो काउंट इट ऑन योर फिंगर कि 5 के बाद अगर आप 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 के बाद क्या आता है? 6. वेरी गुड. सो 5 plus 1 is equals to 6. देन 5 plus 3. अब 5 के बाद 3 को काउंट करो. ओके, यहाँ 3 plus 5 करो. वन एंड द सेम थिंग. सो 5 के बाद 3 को काउंट करो. क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 के बाद 3 काउंट करना है. हियर दिस टाइनी फिंगर, राइट? तो 5 तो ऑलरेडी है, हमें 3 काउंट करना है, तो क्या हो जाएगा? 6, 7, 8. सो हियर द आंसर इज यस 8. सो आवर टोटल, हमारा फाइनल आंसर, राइट? आवर टोटल इज 86. Students, in this way you have to do this exercise, right? And you can write down this from the attached PDF also, from the video also, right? Now, yes, take out new page, write down the date. Okay, exercise 2, addition of 2-digit number without carry. Now students, in this exercise, on ones place and tens place 0 is there, right? So how to solve this? Let's start with the first one. Now 40 plus 13, right? अब यहाँ पे ones place पे ही 0 है. So students, I already told you, any number added to 0, the answer will be the number itself. So 0 plus 3 or 3 plus 0, the answer is 3. है ना? नंबर कौन सा है? 3 को हमने किसके साथ ऐड किया? 0 के साथ. तो वो नंबर कौन सा है? 3. नाउ 4 plus 1. सो 4 plus 1. अब 4 तो है, 4 के बाद हमें क्या ऐड करना है? 4 में क्या ऐड करना है? 1. तो 4 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? यस 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 5. सो आंसर इज 53. नाउ second, 72 plus 2. So students, 2 plus 2 is count. 2 के बाद और 2 ऐड करो.
3 and 4. So the answer is 4. And 7 plus 0. Here 7 is added to 0. What is the number here? 7. So answer will be 7 only. So our final answer is 74. Yes, now the third and fourth. 65 plus 4. Students, here now we will start from the ones place. Now what is given here? 5 plus 4. So count it. After 5, what we have to count till 4. Then count it 4. Start from a tiny finger. 5 के बाद क्या आता है? 6, फिर 7, फिर 8 and then 9. So 5 plus 4 is equals to 9, or else 4 plus 5 is equals to 9 only. Then 6 plus 0. Here which number is added to 0? 6. So the answer will be the number itself, 6. So the final answer is 69. Now the fourth one, 23 plus 10. So here also we will start from the ones place. 3 plus 0 is equals to 3. And 2 plus 1. 2 के बाद क्या आता है? 3. So when we add 2 plus 1, the answer is 3. Yes, now here students, 50 plus 1. Nothing is written here on the tens place. So we will assume that here 0 is given. Right? So 0 plus 1 is, yes. What will be the answer here? Yes, 1. And then 5 plus 0. Nothing is given. कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या assume करेंगे कि वहाँ क्या है? 0 है. तो 5 को हमने 0 से ऐड किया, right? So the answer will be 5. So the total answer is, the total number here is 51. Then 92 plus 3. On the tens place 9 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. So we will assume here that 0 is given. So now 2 plus 3. Again you count it. 2 के बाद 3 count करो, है ना? 2 plus 3 करना है. तो 2 के बाद क्या आता है students? 3, 4, 5. So here the answer is 5. Then on the tens place 9 plus, nothing is given here. I already told you we have to assume 0. So 9 plus 0 is 9. And our final answer is 95. Right? So here we have completed our part 1. And students, your homework is in your notebook. Exercise 3, which you can see from the attached PDF. Okay. And in the next class, we will continue with the part 2.